जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स मैंने 2.2 दी थी आपको करने के लिए, सब बच्चों ने कर ली। वालेकुम अस्सलाम मैम, थोड़े से क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे। हाँ जी पूछें। मैम जो क्वेश्चन नंबर 22 है, एक बार वो तो बता दें दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बेटा मैं निकाल रही क्वेश्चन, तो आपके ओके हाँ जी तो बात करनी है। कौन से 22 कह रही हो? जी मैम। ट्वेंटी टू तो बहुत इजी था स्टूडेंट्स। 22 में स्टूडेंट लॉग लेना था। ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन शो हो रही है ना सबको। जी मैम, हो रही है। अच्छा तो ये जब आपके पास ऐसे है, वैसे तो आप डायरेक्टली भी इसको कर सकती हैं। पहले लॉग वाला अप्लाई करके और देन फ्रिक्शन वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन रूल। लेकिन क्या है, उससे उससे भी यही आंसर आएगा आसानी से, वैसे वो उससे भी हो जाएगा। लेकिन इसको मजीद आसान करने के लिए सबसे पहले लॉग खोल लेंगे। तो आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, अगर दो फंक्शंस का लॉग ले रहे हैं, अगर इस तरह से हैं दो फंक्शंस, एक एफ ऑफ एक्स है डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स है, तो आप उसे लिख सकते हैं log ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स।
ठीक है, तो न्यूमिनेटर में क्या है, log ऑफ e रेज टू दी पावर x, यहाँ पर f ऑफ x क्या है, e रेज टू दी पावर x, और डिनोमिनेटर में क्या है, log ऑफ 1 प्लस e रेज टू दी पावर x। ये मैट्रिक में पढ़ी हुई है, आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना। जी मैम। अब यहाँ पे लॉगरिथमिक रूल अप्लाई करेंगे, 1 बाय दैट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन माइनस 1 बाय दैट फंक्शन multiply by derivative of that function. That function derivative 1 derivative equal to 0 plus e raised to the power x derivative e raised to the power x। ठीक है, तो ये वाला टर्म इससे काट गई तो यहाँ रह गया 1 और यहाँ रह गया e raised to the power x 1 माइनस e raised to। ठीक है, अच्छा इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया है, 1 प्लस ई रेज़ टू दी पावर एक्स आ गया माइनस ई रेज़ टू दी, ये से कट गया और ये आपका आंसर। हाँ जी, और कोई प्रॉब्लम समझ आ गई? जी मैम आ गई है। ठीक है, अच्छा और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। मैम अगर बेस में हमारे पास कांस्टेंट और पावर में वेरिएबल हो तो फिर क्या करते हैं? फिर आप स्टूडेंट्स कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव सारे जीरो आ जाता है, देन भी ये जी। रूल अप्लाई कर सकते हैं, अगेन ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, लॉग ऑफ होल कांस्टेंट विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ होल कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 0। ओके सारे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन है तो बताओ, कर दीजिए। मैम क्वेश्चन नंबर 35 एक बार देखिएगा। हाँ जी, हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, इसके लिए सबसे पहले तो आपको हाइपरबोलिक फंक्शन के मैम आने इसमें चाहिए। सिर्फ आंसर में बस एक चीज पूछनी है। हाँ जी, मैम ये पूछिए। जो इधर दिया हुआ -2 साइन हाइपरबोलिक x ओवर 1 प्लस कोस हाँ हाइपरबोलिक x ओवर स्क्वायर, यहाँ तक हाँ आंसर हाँ ठीक जी, है? मतलब यहाँ तक हाँ हम कर सकते हैं, आगे ना करें तो कुछ नहीं होगा? हाँ जी, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन फर्ज करो जैसे आपके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, आपको ये आंसर गिवन हो, देन आना तो चाहिए ना। इसमें कोई नया नहीं है, ये पुराने फार्मूले यूज हो रहे जी जी मैम, वो तो हैं। ठीक है। इसमें क्या किया उन्होंने, सारे को लिख लिया है, हाफ एंगल फार्मूला यूज किया है, 1 प्लस कॉस, ऐसे होता है ना, हाँ 1 जी। प्लस कॉस एक्स इक्वल होता है 2 कॉस एक्स, बट याद है कुछ? अब आप लोग जो है ना कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, ये एक कोर्स पढ़ के जाने छूट जानी, आगे पढ़ते ही रहना है, काफी कोर्सेज हैं आपके, तो जो इंटरमीडिएट वाला है वो जो है ना सारा माइंड में होना चाहिए। मैम इंटर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ ये पढ़ के आपकी जान नहीं छूट जानी, ये वाला कोर्स आगे फर्दर मैथ के पढ़ते ही रहना है, तो ये हाफ वाले एंगल फार्मूले फर्दर यूज होते ही रहने, तो आप लोग जो है ना इनको माइंड में रखें, याद रखें। हाँ जी, और कोई जी जी क्वेश्चन? मैम 37 समझा दें। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें बेस वाला लॉग यूज किया और बेस वाले लॉग को फर्दर नेचुरल लॉग में तब्दील किया। अच्छा, तो आपको पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ई था ना, कैसे कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक में किया हुआ है आप लोगों ने,
अगर आप मैम काइंडली थोड़ा सा ऊंचा बोल दें। अगर आपके पास अब आ रही आवाज? जी मैम अब आ रही है। अगर आपके पास स्टूडेंट्स इस तरह से है, या फिर यहाँ पे कोई भी नंबर है, फर्ज करो ई है यहाँ पर नंबर, और यहाँ पर नंबर बी है, तो जब नेचुरल लॉग में इसको कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पर लॉग ऑफ बी, ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ई है तो वही का फॉर्म, ये फार्मूला मैंने यूज किया है। नीट करके लिख देती हूँ दोबारा से। ई रेस टू द, ठीक है, इस फार्मूले को यहाँ यूज किया है। लॉग ऑफ ई रेस टू द पावर, ये बी की जगह ये फंक्शन था तो लॉग ऑफ दिस लिख दिया। ठीक है, यहाँ लॉग ऑफ ई रेस टू द जी पावर 10 की जगह नेचुरल लॉग ऑफ 10 लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब ये जो पूरी टर्म थी ये सारी जी कांस्टेंट थी, बजाय ये कि इसको हम साथ साथ लेके चलते, इसको एक ही दफा सेपरेट कर लिए, कांस्टेंट टाइम्स ऑफ द फंक्शन अप्लाई किए और डेरिवेटिव इसके लिए यूज किए। जी इसके लिए कैसे यूज किया, एक तो यहाँ तो उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन रूल लगा लिया है। आप डायरेक्टली बजाइए कि इतना जी लंबा जी इसको करें, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, log ऑफ x प्लस 1 एक्स प्लस माइनस log ऑफ माइनस x, लॉग एक्स। तो यहाँ आ जाएगा 1 बाय x प्लस 1 बाय x। इसका फर्दर जब एलसीएम लोगे तो ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, और ये टर्म साथ में वैसे आ रही। जी मैम हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? थैंक सिर्फ यू। एक ही बच्ची ने काम किया है, बाकी सारे सबके काम किधर हैं? मैम मैंने कंप्लीट कर लिए हैं 60। सारे हो गए हैं और बाकी? जी मैम सारे हो गए। बाकी और मैं कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? देन नेक्स्ट मैम एक दफा क्वेश्चन 15 वाला थोड़ा सा बता दें। 15। यस मैम। इनवर्स का फार्मूला यूज किया, tan इनवर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा फंक्शन है cos इनवर्स x स्क्वायर है, आपने इसको बाय चेन रूल करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, सब्स्टिट्यूशन की है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू cos x स्क्वायर आपने इसको डेरिवेटिव करना था, तो इसलिए इसको u के इक्वल लिख लिया, आर्क cos x स्क्वायर। तो u के इक्वल लिख के, तो दूसरी तरफ जब आप इसको लेके गए हैं तो इस तरह से cos u x स्क्वायर आ गए। ठीक है, जहां जहां पर भी x स्क्वायर था वहां cos u x पुट कर दे। अच्छा, अब यहाँ पर अगेन हाफ एंगल फार्मूला यूज किए, वही जो मैंने अभी लिखा भी था पहले, cos x इक्वल होता है टू cos स्क्वायर
एक्सपेक्ट अपने ना रजिस्टर के आखिर में सारे इंटरमीडिएट वाले फार्मूले लिख लें जितने भी हैं, ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप उसे देख के लिख पाए, दोबारा दोबारा बुक ना खोलनी पड़ी इंटर की। तो यहाँ मैंने ये वाली टर्म इसलिए सब्स्टिट्यूट की है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना ज़रूरी था इसलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके बगैर यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं। हाँ अलबत्ता रैशनलाइज हो सकता है, लेकिन रैशनलाइज इसलिए नहीं किया कि उससे भी क्वेश्चन जो था वो लेंथी हो जाना था, इसलिए हाफ एंगल फार्मूला यूज़ किया, ठीक है, ताकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। जब यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, यहाँ स्क्वायर रूट स्क्वायर के ऊपर तो स्क्वायर रूट रहेगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो बोथ साइड पे न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में से भी स्क्वायर रूट कॉमन ले लिया और बाकी ये टर्म आपके पास बची। अच्छा, अब इसमें से स्टूडेंट्स क्या किया, cos u/x जो है u/2 सॉरी, ये कॉमन ले लीजिए। जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन u/2 और डिनोमिनेटर में से भी जब कॉमन लेंगे cos u/2 रिमेनिंग रह जाएगा 1 प्लस ठीक है। तो जब स्टूडेंट्स आपने कॉमन लिया तो ये वाली टर्म इसे कट गई और ये क्या बन गया, साइन बाय कॉस एंड u/2 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan u/2, ठीक है। अच्छा, तो आपको स्टूडेंट्स पता है tan जो 1 होता है वो किसके इक्वल होता है, tan 45 इक्वल होता है हमेशा 1 की, ये भी इंटर में पढ़ा हुआ है। और tan 45 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं tan π/4, तो 1 की जगह पे रिप्लेस किया tan π/4, इसलिए रिप्लेस किया क्योंकि फार्मूला होता है एक tan a माइनस b tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a, ये भी आप लोगों ने इंटर में पढ़ा हुआ tan b। तो जब इसको करेंगे तो आ जाएगा आपके पास tan a माइनस b, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज किया है, tan और tan इनवर्स क्या हुआ है, अभी कट गए और ये वाली टर्म रह गई, और जब आपके पास ये रहेगी, अभी तक स्टूडेंट्स आपने डेरिवेटिव नहीं लिए, अभी तक क्या है आपने डेरिवेटिव नहीं लिए, अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी, अब इसका डेरिवेटिव लेना आसान, dy/du करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड करना था ना, u मींस टू से दैट cos इनवर्स स्क्वायर x फाइंड, उसके रिस्पेक्ट करना था, तो आपके पास आ जाएगा -1/2। दैट क्लियर? हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। मैम 14 करवा दें। 14 ये 4, अच्छा 14 इससे पीछे है। अच्छा 14 में स्टूडेंट यहाँ मॉडुलस यूज किया है, यहाँ पर मॉडुलस यूज किया हो, तो जब मॉडुलस हो तो मॉडुलस आपको पता है दो वैल्यूज, मॉडुलस को जब खोलें
आई थिंक आप लोगों ने किया होगा ये भी। इसकी दो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, एक रेंज के अंदर ये इसकी वैल्यू होती है -1 से 1 के दरमियान, अगर ये लेस देन 1 है। यहाँ पर जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब यहाँ 1 की जगह पे 0 होगा। ठीक है, तो एक दफा पॉजिटिव के लिए कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव रेंज के लिए 0 से ग्रेटर के लिए, और एक दफा 0 से लेस के लिए करेंगे। ठीक है, ये लेस के लिए नेगेटिव साइन होगा मॉडुलस खोलते वक्त, और ग्रेटर के लिए पॉजिटिव साइन होगा इसको खोलते वक्त। ठीक है, तो जब आपने पॉजिटिव साइन रखा है तो यहाँ पर ऐड होके 2x आ गया, और जब नेगेटिव रखा है तो सारा 0 आ गया, और जब पॉजिटिव का डेरिवेटिव लिया है तो यहाँ पर क्या होगा, फर्दर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, और 0 का डेरिवेटिव तो होता है 0। इज दैट क्लियर? यहाँ कहीं भी स्टूडेंट्स मैम। आपने यहाँ कहीं भी मॉडुलस हो, आपने सबसे पहले नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से उसको अलग अलग खोलना। अस्सलामुअलैकुम मैम। मैम क्वेश्चन 7 करवा दें काइंडली। 7 यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। मैम वो फॉरेनर स्टूडेंट्स कह रहे हैं इंग्लिश में बता दें। अच्छा, उनका याद ही नहीं रहता, वो भी है। Okay, students. See here, question number 7. You have r tan inverse x sine alpha divided by 1 minus x sine alpha. So, students, you can take here this part, this angle as it is, or you may also substitute here some number, means to say that you may substitute here all of these equal to u, and you may write here like that u sine alpha divided by 1 minus x cos alpha. When you write here and you will use u as a variable, then you will take derivative with respect to u, and wherever you will use derivative of u will be used derivative of u. You will be first calculated here derivative of u, and then you will be substitute here. And another way, you can take this function as it is, as they solved here. How they solved here? They have used tan inverse derivative, tan inverse x derivative, which is always equals to 1 divided by 1 x. So here is, in place of x, this angle we will substitute. We will substitute here this, and then we will take derivative of that angle. Rejoin again when class has to be end. So we have taken derivative of this one function. Here we have taken square in numerator and denominator, and then we have taken LCM, and then we have simplified. How we have simplified? We have put all of these equal to sine alpha. We have explored that
this, we have used here formula of a minus b whole square. A square 1, b square x square cos square alpha, and then minus 2ab. Here it comes. And then we have taken derivative of this one function. We have taken this function in numerator. We have taken its derivative, and here it comes sin alpha. On the other way, in the right side, we have taken derivative of this one function. We have taken here derivative by quotient rule. When we have applied quotient rule, we have taken square of numerator, put it derivative of denominator, put it derivative of denominator as it is minus denominator derivative and numerator as it is. And then we have simplified. How we have simplified? We have multiplied sin alpha to this function minus sin alpha to this function, minus will be plus. And when we have multiplied, this term and this term has to be cancelled out, and we have remained only sin alpha. So we have right here sin alpha as it is. And also when we have simplified this function, we have taken x square from this term common. When we have taken x square common, here it will remain, here there will be remain cos square alpha plus sin square alpha, and cos square alpha plus sin square alpha will be equal to 1, and this one term will be as it is. One will be also as it is. Is that clear, students? Any other question which you have attempted and it remains also unsolved? मैम 26 क्वेश्चन करवा दें. 26 question. अच्छा. 26. In 26 questions, first you will firstly apply the property of log, which I have told you earlier in the start of lecture, that you will be applied here log of f of x minus log of g of x. Here f of x is that function and g of x is that function. Firstly, you will apply the property of log. Here I have applied here only the property of log. Here I have still not taken derivative. In this step I will have the derivative. After applying the property of log, how will we take its derivative? We will use the rule of derivative for logarithms. What is the rule? 1 by that function multiply by derivative of that function. So what will be the function? Here it will be the function, and derivative of that function will be equal to this one term. Here is function and here is its derivative. In the next step, we have simplified. How we have simplified? We have taken this term as a common because it is common in both the terms. So I have taken common in both these places. When I have taken common, here it remains in bracket this one term, and then I will take its LCM.
when I have taken its LCM, this term will become into that place, this term will become into that place. And after taking LCM, this term and this term will be cancelled out. This term and this term will be added. These are both same, that's why here it comes to into b plus a square root. B plus a square root and b plus a square root will be cancelled out. Here is b square minus a square. When we explore it by using a square minus b square formula, which is always equals to a minus b plus a plus b. By using that formula, we have explored that. Uh, apply square root separately on both terms, and this term will be cancelled out to this term. 2 will also be cancelled out to this term, and it remains cos secant square alpha by 2 divided by this term. In the next step, numerator will remain as it is, and here again taken LCM of denominator. In denominator, when we have taken its LCM into denominator, cos square will become into numerator, okay, and in denominator taken b from this term and this term common, and a common from this term and this term. So here will be cos square alpha by cos square x by 2 plus sin square x by 2 will be equal to 1, as cos square alpha plus sin square alpha is always equals to 1, and this will be equal to cos alpha. How? As you have written in intermediate half angle formula, cos square x minus sin square. And when we use angle x here it comes half of that angle. So here it comes cos square x by 2, half of x minus sin square x by 2, half of that x. And in this place we have substituted cos alpha. And student, all of this will be equal to 1. How? As cos square x by 2 as it is, and secant square x by 2 will be equal to 1 minus cos square x by 2. Is that clear? So it will be equal to 1. Okay, students. 1 minute remain to of the session. CR and GR, please take screenshot of this session. CR and GR, are they present in the class? Please take screenshot of that session, and in the next session you will take again screenshot at the end. Yes, ma'am. Please take screenshot of that session. Yes, ma'am. Screenshot of present students, not of the screen. Take screenshot of the present. Okay, ma'am. Participants के screenshot ले ले. हाँ जी, पार्टिसिपेंट्स के लेने हैं और दोबारा से स्टूडेंट्स रीज्वाइन करो. 1 मिनट से कम रहता है, दोबारा रीज्वाइन करो, देन आपकी नेक्स्ट पार्ट. जी स्टूडेंट्स, और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13 देखो. क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, वैसे ये तुमने करके देखा था, ये तो बहुत आसान है.
स्टूडेंट्स एक दफा अटेम्प्ट किया करें, क्वेश्चन की शक्ल देख के ना परेशानी का शिकार हो जाया करें कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। यहाँ पर इसको ऐसे ले लेंगे, ये पावर रूल है, सबसे पहले तो अप्लाई करेंगे। पावर रूल के मुताबिक क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय दैट फंक्शन, ये वाला फंक्शन यहाँ पर आ जाए, and here it will be 1/2 minus 1, and then we will have to take derivative of this one function. We will have to take derivative of this one function. And how we will take derivative of this one function? Derivative of x will be equal to 1 and derivative of this one will be equal to, we have taken this one as 1/2. So when we take derivative of this one function, here it will be 1/2 multiply by x plus x square root whole raised to the power 1/2 minus 1. 1/2 minus 1 will be equal to minus denominator to make the power positive. And then next we have taken derivative of this one here. Derivative of x will be equal to 1 and derivative of x square root will be equal to 1/2 x square root. So after taking derivative, now at that step derivative has to be completed. You may write this as it is, or you may also more simply become its simplified form, multiply by this number by this by taking LCM. When you simplified it, there is no term to be cancelled out, so it remains as it is. That's why they have not simplified more. Any other questions, students? Is that clear? Your question clear है? मैम क्वेश्चन नंबर 27 समझा दें। Twenty-seventh questions. Just once, as you know that derivative of 3 terms which are multiplying to each other will be let's suppose you have 3 functions like that. How you will take its derivative? You will write here derivative of first function, here g and w will g of x and w of x will be as it is, plus f as it is derivative of second one function, plus f as it is derivative of, and g also as it is derivative of w. Firstly, you will take derivative of f, g and f, w will be as it is, plus f as it is derivative of g and w as it is. At the third step, f and g as it is and w derivative of w. So here you will take first function as x, second function as e raised to the power x, and third function as sine hyperbolic x. There you have taken here derivative of sine hyperbolic x and this one as it is. Then plus first and second as it is, this one and this one as it is derivative of ex, and plus this one and this one as it is and derivative of 1. And after taking derivative of all these terms you have seen here, you can see here a raised to the power x
may you take common because it is included in all terms. So you have taken a raised to the power x common here. Any other question? The microphones बंद कर ले students. ये कौन है? मैं कह रही हूँ अपने फोन जो है वो बंद कर लो. हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? मोहम्मद अवैस, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? आप लोगों ने कानों को लगाए हो फोन हेडफोन तो पता हो ना आप लोगों को. क्लास ऑन करके तो खुद कहीं गायब हो जाते हैं. हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है तो बताएं, देन नेक्स्ट फिर हम चैप्टर की तरफ जाएंगे. कोई क्वेश्चन नहीं? Is there any question of foreigners? No, ma'am. Thank you. Okay, students, if you have complete concepts of derivative, I am going to start partial derivatives. Come to the page number 93 of book. मैम कौन सा पेज नंबर? 93. Students, खोलिए सब.
Partial derivatives. What are the partial derivatives? Students, in simple derivative, focus which I am saying. There is little bit difference in partial derivatives and ordinary derivatives, which I have done in last 3 lectures, which I have teach in last 3 lectures of last week and in the previous week. I have taught you the ordinary derivatives. In ordinary derivatives, one dependent variable and one independent variable are involved. And you may write here in that way dy by dx. Okay. But in partial derivative, and you will have a function like that. Like if you have function like that, you have always involve one dependent variable and one independent variable. Partial derivative, students. In partial derivatives, you have one dependent variable and two or more independent variables. In partial derivatives, one independent variable and two or more independent variables are involved. What is the difference? In ordinary differential equation, you have only one dependent variable. In ordinary differential equation, you have only involved one dependent variable and one dependent variable, but in partial derivatives, one dependent variable and two or more independent variables are involved. So when you will take derivative of this function, you will be consider one independent variable as a variable and the other you will be considered as a constant. Okay, and you will use here sign of partial derivatives like that, curl of f divided by curl of x, and you may read here partial derivative of x with respect to x. You may read here partial derivative of f with respect to y. You may write here partial derivative of f with respect to partial derivative of z. So students, I will do one question, then you will be better understand. Let me take here question like that, f, x and y. Focus on the screen. I feel so this topic is new for you. You have not done derivatives, partial derivatives in intermediate f, and you have no concept of it. Focus on the screen. Your students course is multivariable calculus, means to say that here is multiple variables will be involved. In a single derivative, you not involve multiple variables. You only involve one independent or one dependent variable. But in the partial derivative, you involve multiple variables. Okay, students, I am taking its derivative with respect to x. Focus on the screen. Firstly, I will apply here partial f by partial x.
Students, I am taking its derivative with respect to x. With respect to x. So I will treat here y as a constant. As I am, listen once again carefully. I am taking its derivative with respect to x. That's why I will take y as a constant. Okay. So I will apply here function raised to the power constant because y square is constant here. Okay, so how will I take its derivative? Y square I will take as a constant x raised to the power y square minus 1 and then derivative of x, partial derivative with respect to x, partial derivative of x with respect to x is always equals to 1. So here it comes x raised to the power y square minus 1. Okay. Now I will take partial derivative of this function with respect to y. With respect to y. So when I take its derivative with respect to y, I will treat x as a constant. I will be treat x as a constant and y as a variable. And y is a variable. So how to solve this constant raised to the power function. Constant raised to the power function. So we will use formula of constant raised to the power function x raised to the power y square as it is, constant raised to the power function as it is, multiply by derivative of that function and multiply by log of that constant. X raised to the power y square, partial derivative of y square 2y and log of x. Is that clear? Students, ask any question if you have till here. Then I will do another question. मैम इस क्वेश्चन को रिपीट करिएगा जरा. इस क्वेश्चन को रिपीट मैं कर देती हूँ. इसमें ये है स्टूडेंट, जब आप एक के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट करो एक्स के रिस्पेक्ट ले रहे तो वाई कांस्टेंट होगा. ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट ले रहे हो तो एक्स कांस्टेंट होगा. एक्स को आप ऐसे ट्रीट करोगे जैसे कांस्टेंट को ट्रीट करते हो. समझ आई बात की? और विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट करोगे. रूल्स सारे पिछले वाले ही यूज हो. हाँ जी, और कोई बात? मैम ये एक बार फिर बता दें, जब हमने y को एज अ कांस्टेंट लेना है. y को कांस्टेंट लेना है तो स्टूडेंट जैसे y को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, जैसे आप पावर वो करते थे पिछले डेरिवेटिव x रेज टू दी पावर 7 करते थे तो 7 कांस्टेंट होता था तो 7 को बाहर ले लेते थे, पावर में से 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते थे और डेरिवेटिव ले लेते थे x के रिस्पेक्ट. याद आया कुछ? बिल्कुल जैसे 7 कांस्टेंट था इसी तरह से यहाँ पर y स्क्वायर कांस्टेंट होगा. पावर रूल अप्लाई किया है. आई हैव अप्लाइड हियर पावर रूल. हाँ जी. और मैम जब हमने वेरिएबल लेना है y को, हाँ जी, जब आपने y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर x कांस्टेंट होगा. जब y के रिस्पेक्ट कर रहे हो तो x कांस्टेंट होगा. तो यहाँ 7 रेज़ टू द पावर x होता था तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते थे? 7x as it is, derivative of x and log of x
इसीलिए मैंने कहा था कि पिछली एक्सरसाइज सब बच्चे कर लें, जिसको कंप्लीट डेरिवेटिव आएंगे उसको पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट हियर इज नॉट एनी न्यू रूल टू सॉल्व डेरिवेटिव, here is not any new rule to do solve derivative. You will use all other previous rules which you have used in 2.2 and which you have used in intermediate. You will use all these rules of intermediate and all the rules of 2.2. Just here is difference in procedure of taking derivative. In the previous exercises, you have taken ordinary derivative and here you are taking partial derivatives. Is that clear? If you have any other question, you may ask, then I will do another question for your better understanding. Okay, students. Let me do another question. I have right here log of x square plus y square. Now you will tell me what I will have to do here. I will do firstly, students, partial derivative of f with respect to x. Partial derivative of f with respect to x. So what will be here? 1 by x square plus y square. 1 by x square plus y square. And you will treat here, student, x as a variable and y as a constant. You will be treat here x as a variable and y as a constant. So you will take derivative of x square plus y square. And how you will take derivative of that variable? This all term will be as it is. Derivative of x square will be 2x and derivative of y. Derivative of y square. Student, what will be the derivative of y square? 0. Hanji, yes, very good. Derivative of y square is 0 because you are treating here As a y constant. as a constant. Is that clear? So I will take again derivative of. Okay, students, let rejoin again. Wait for a while.
Okay, students, now I will take here derivative. Now I will take derivative of that function with respect to y. 1 by x square plus y square. And now I will treat here x as a constant or y as a variable. So how I will take its derivative? Any students tell me? Any student off your on your microphone and tell me. 0 plus 0 plus 0 plus. Shabash, that's very good. It means you are understanding partial derivative. So if you have understand that, then you solve that and then rejoin again. 5 minutes remain to off the session. Rejoin again and students also do that question. Here are 3 variables involved: x square plus y square plus z square. Students, I am doing 2.6 question. Firstly, which I have removed from here, I have done 15 question, and this one question is 20th. This one question is 20th, and this one question is 22nd. So you will find here partial f by partial x, partial f by partial y, partial f by partial. ठीक है? Take all. Take derivative of these and then rejoin the session again. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम।
Mhm. अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मैम, मुझे नहीं पार्शियल डेरिवेटिव समझ आए। हम ना तुम कभी एक अटेम्प्ट में समझ भी जाया करो हैं। तुम्हारी शक्ल मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। तुम फिजिक्स क्लास में भी तुमने जरूर सारा रिपीट करवाना होता था। कौन अभी एक बच्ची ने करके दिखाया था मुझे जो आंसर कर रही थी, वो कौन थी? हाँ जी, क्या नहीं समझ आई, हम ना पूछो। स्टूडेंट वो वाले कर लिए जो 3 वेरिएबल्स में थे। यस मैम, कर लिए। दैट्स वेरी गुड। बाकी भी कर है स्टूडेंट। ये मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि योर ऑल कोर्स डिपेंड ऑन दीज मल्टीपल वेरिएबल डेरिवेटिव्स। ओके, that is all in all of your course. So much too when I gave you a question to solve. यस मैम, कर लिया क्वेश्चन। What about others? जी यस मैम मैम। मैम जी, एक करके दिखा दें, मुझे समझ लगी। ये आप पहले की again or with respect to x. Okay, and you may write here this one like that. Also you may write this one function like that. Okay, and also you may write f x and x, and also you may write here f x square. Okay, here students, f of x is equals to partial f by partial x, partial f by partial x. Is that clear? अच्छा, see question number 25. See question number 25. You have question like that. E raised to the power x, y. I will take its derivative, second order derivative. Means to say I want to calculate this one term. So how I will calculate? Focus on the screen. Firstly, I will calculate partial derivative with respect to x. F of x. And how, what here comes, students, here we will treat x as a variable and y as a constant. X as a variable. So
we will use exponential rule. A raised to the power xy as it is, multiply by derivative of e raised to the power xy and multiply by log of e. So but here comes x raised to the power y, and what will be the derivative of this one function? Y is constant here. Y it is e raised to the power x derivative of e raised to the power x, derivative of e raised to the power x. Y will be as it is, x raised to the power y minus 1 and log of e is equals to 1. This is your solution of f of x. Okay, here it comes f of x. ये यहाँ पर स्टूडेंट्स f of x अभी तक हमने कैलकुलेट किया, अभी तक हमने सेकंड ऑर्डर कैलकुलेट नहीं किया जी, जैसे पहले कैलकुलेट किया था बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे. ये नाउ आई विल कैलकुलेट सेकंड ऑर्डर. How I will calculate second order? I will take derivative with respect to x. I will take derivative of this one function with respect to x. Again, x raised to the power y minus 1. Here students, first term y, we will treat y as a constant, so we will use constant times of the function. Y will be taken as it is, separately constant as a constant. We will use this one and this one as a function. So what rule we will apply here? We will use here constant times of the function, means to say e raised to the power x as it is, e raised to the power x derivative e raised to the power x, and x raised to the power y minus 1 as it is, plus e raised to the power x as it is, derivative of x raised to the power y minus 1 will be y minus 1, x raised to the power y minus 1 and derivative of x 1. So here it comes y e raised to the power x x raised to the power y minus 1 e raised to the power x y minus 1 x raised to the power y minus 2. Is that clear, students? Listen once again. Listen, students. I will take derivative 2 times. Firstly, I have taken derivative with respect to x. The result which will become, you will take derivative of that result again with respect to x. And in the whole procedure, you will use y as a constant. And you will apply all the previous rules which you have used in 2.2. If you have no problem, then do that question. By yourself. X minus 1. You have calculated here fx. एक्सक्यूज मी मैम. Yes. मैम जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी लिया था, तो इसमें नहीं हम लेंगे? हाँ जी, इसमें भी लेंगे. मैं स्टूडेंट्स चाह रही हूँ कि आपको अचानक से सारा कुछ ना बताऊं, कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग, इसलिए मैंने अभी तक उसके बारे में बात नहीं की. फिलहाल ये डबल टाइम डेरिवेटिव एक्स का समझो, ये अगर अच्छे से समझ आती है तो वो भी आ जाएगा. ठीक है, दैन मैं उसकी तरफ आऊँ, वो भी करेंगे. ठीक है, क्या मैम? ये आ गई समझ?
जी ये तो आ गई। चलो फिर करो इसको, ये जो मैंने दिया। कर रहे स्टूडेंट्स? जी मैम ट्राई कर रहे हैं। और बाकी लोगों ने? यस मैम, कर लिया हमने। दैट्स वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स y के रिस्पेक्ट भी बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे लेना है, ठीक है। इधर देखो, फोकस करो जरा, मैं y का फार्मूला लिख रही हूँ। पार्शियल y, तो पार्शियल एफ वाई पार्शियल y will be equal to partial square f partial y by partial y will equal to partial y of f of y, and also you may write this like fyy, and you may write also like that. So students, these are 1 2 3 4 5 ways you may write second order partial derivative with respect to y. There are students 5 ways you may write partial derivative with respect to y. Any of these ways you may use. Here students, important to tell you that partial f by partial y will be equal to partial y. Is that clear students? If this is clear, so take derivative of this one with respect to y. Take derivative, calculate here f y y. हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैम ये जो सेकंड वाली लाइन है ये रिपीट करिएगा। सेकंड वाली लाइन में ये लिखा है मैंने स्टूडेंट्स के, जो पार्शियल डेरिवेटिव का सेकंड ऑर्डर फाइंड करना है, आप इन पांचों में से किसी भी एक तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब भी वही है कि पार्शियल एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेके तो दोबारा उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको सिंपली ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर पार्शियल एफ और वाई जो है ये सबस्क्रिप्ट में है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मतलब ये जैसे होता नहीं है नीचे छोटा सा बना हो सबस्क्रिप्ट में, पता ही होगा आपको क्या मतलब होता है, तो इस तरह से है, ठीक है। ये पेज नंबर, स्टूडेंट्स मेरी थोड़ी राइटिंग इधर
गड़बड़ सी है। 93 पेज के ऊपर ये सारे लिखे हुए हैं फार्मूले। फिलहाल मैंने इसमें से 2 आपको बताए हैं, 4 लिखे हुए हैं सेकंड ऑर्डर। in page number 93 4 formulas are written. You may follow from here. I have teach you first one and last one, and between first and fourth, second and third I will teach in next lecture. Okay students, so do now fyy, take derivative double times or second order derivative of f with respect to y. Also students, listen your homework. You will do students question number 15 to 22. From 15 to 22 you will find first order. You will find first order. First order means to say that you will just calculate fx and fy. You will calculate just only fx and fy from 15 to 22. Okay, and from 22 to 26 you will calculate fxx and fyy. Okay, that is your homework. Now do fyy. ये कौन झाड़ू लगा रहा है? माइक्रोफोन बंद कर दे इसमें। दूसरे मोबाइल की बैटरी लो थी तो रात को वो बंद हो गया, लाइट नहीं आई, तो ये मेरा सेकंड मोबाइल है, इस पे डाल लीजिए। Muhammad Ahmad, are you listening?
ओके स्टूडेंट्स, टाइम खत्म होने वाला है क्लास का। कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछ लो, और नो एक्सक्यूज एट ऑल। मैंने आज बहुत काम कम दिया है आप लोगों को, तो ये हर सूरत आप लोगों ने मुकम्मल करना है, ठीक है? मैम हाँ जी। मैम ये आपने जो हमें करवाया क्वेश्चन जिसमें हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो मैम इसका एक तो आंसर हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स का और एक हो गया विद रिस्पेक्ट टू वाई का। तो बुक पे उन्होंने 3 आंसर्स दिए हमें। पीछे 3 ही 4 दिए होंगे। मैंने आपको बताया है अभी के 4 फार्मूले हैं सेकंड ऑर्डर की, मैंने अभी 2 बताए हैं आपको। आप पहला और आखिरी आंसर वेरीफाई करें, ठीक है? ठीक है। दरमियान वाले 2 मैं आपको नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी। मैं चाह रही कि पहले आप अच्छी तरह आपको आ जाए, तो फिर वो स्टेप बाय स्टेप आगे चलूं। एकदम से सारे बता दूंगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ठीक है मैम। और जिन बच्चों ने का पिछला काम भी रहता है वो कर लें, ठीक है? कोई क्वेश्चन है और तो पूछ लो रहने। CR and GR, did you have taken screenshots? Yes, ma'am. Of all 3 sessions? जी। इन सबको अपने पास सेम रखो मानूर, और ठीक है जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपसे लूंगी, डिलीट नहीं करने मोबाइल से, ठीक है? ठीक है मैम। Okay student, then do your homework. ठीक है, see you next time. अल्लाह हाफिज।